हर आदमी की एक अपनी स्टोरी है। अच्छी स्टोरी मेरे हिसाब से, आई एडमायर कुलदीप। सो सर सेड मी, वजन बढ़ा सकती हो? मैंने बोला सर खाना तो शौक है। ऐसा लगता है कि ये बड़ा ऑर्गेनिक है, इट्स नॉट डिजाइन्ड द वे द स्टोरीज टॉक टू ईच अदर एंड द कैरेक्टर। मैं इनकी बेटी थी और इन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो सबसे पहले तो मैं सर को इस चीज़ के लिए थैंक्स करूँगी कि उन्होंने मुझे बिहारी सिखा दी इस चक्कर में। That's how the all the independent films जुगाड़ होता है। मूवी का नाम भी आपने पवई रखा है। हमारे डायरेक्टर वही रखते हैं। हाँ, that makes sense. तो ये डिसीजन कैसे लिया कि let's base it in पवई? हमारा वर्कशॉप हुआ था, कोडिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, टर्म्स एंड टेक्निकल टर्म्स एंड ऑल हमें सिखाया गया और बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ी उसको याद रखने के लिए। नो मूवी लुक वेरी ऑथेंटिक। सो व्हाट वाज द रिसर्च प्रोसेस इन राइटिंग and how much time it took for you to write the script and be satisfied? Kudos to the sound design, like the starting drone shot with a few sounds coming in, that was epitome of it. For coming, and of course we're going to ask you how was your reaction watching the film for the first time on the big screen. I'm sure most of you are watching it for the first time, right? Yes? Alright, over to you Kuldeep, and of course we are going to come and take audience reactions as well. Here. Yeah. So Usha, Smriti Mishra, Smriti Pandey as Rubina, Rubina as then we have Linda, her friend, she played her friend. We have Jitendra as Nagesh. You must be scared of him now. And Satyen as Srini. Shilpe Singh as Abu. And he was first story. And Urvil, my sound designer. You can see the. Thank you so much for coming, and encouraging independent films. If you have any questions, I'm very happy to answer. Hi everyone, congratulations on a very brilliant film. My question is for Kuldeep and Urmila. Hi Urmila, I'm Shashi Mukherjee, I'm also from Assam. So I just want to ask you about your collaboration process in terms of developing the Assamese cultural aspect of your character. Like this, you brought in the Bhupen Hazarika song as well. How was it like developing that part? So when I was writing, so earlier, I mean, in the third story, the girl was not from Assam, and then we thought, okay, since we are talking about women and the migrants in the city and all that. So if you notice, the first one is already there in the city, but then she moves out. The second one is already staying, and third one is just moving into the city. So why not pick the farthest end of the country? So it will add more layers and more backstory and everything. So this is how we started, and then there is no music in the film. There is no background score also, but we wanted to keep something, something that creates a mood and all that, and that's how the rhymes in the Anganwadi or the Bhupen Hazarika song and all those things came up. Because she's playing with with a child and all that. And then in pre-production and all that, we had workshops and all that, and Urmila can tell us more. Thank you, Kuldeep. First of all, when we were doing this, planning for this character, developing this character, I would like to appreciate my director because he
has so much of knowledge of Northeast Assam as well as culture, music. So he actually asked me to sing a song by Bhupen Hazarika, and Bhupen Hazarika being an Assamese, it's not a name, it's a sentiment, right? তুমি অসমীয়া? হয় হয় অসমীয়া। তুমি ভূপেন হাজৰিকা ক'লে ইয়াৰ goosebumps আহিছে মোৰ। So he is our identity actually, you know, Bhupen Hazarika. That Ganga song, that Brahmaputra, the lifeline of Assam, you know, the mighty Brahmaputra. So he asked me to sing a song. Then I thought कि इससे बेहतर song कौन सा हो सकता है, like, you know, yeah. So he gave me that opportunity to choose a song, so I chose this. Lovely job done. Thank you so much. Yeah. Any specific reason that you didn't have any visuals? So the point was, make the audience as observers, and I did not want to lead them to feel something in a certain way, because a scene can be interpreted in a multiple ways, and wanted to make them as an observer and then take their own interpretation. So, I mean, at the end of the day, music is kind of manipulation. You try to manipulate the audience, okay, feel certain way and all that. So I want to, stay away from that and let the audience, immerse into it and take their own, takeaways. Thank you. We'll also like to hear from the other actors your experience, but please, yes sir, go ahead. Yeah, yes. Just a small question. So, love the interaction between the whole three parts of the story. We have seen a lot of movies where at the end it all makes sense. But here, it has been interacting with each other. So, for example, let's take that where they went for a loan. We see two different stories interacting with each other. So, is that an idea derived from the start, or I just want to like the process? And kudos to the sound design, like the starting drone shot with a few sounds coming in. That was epitome of it. Like, I thank you from the bottom of my heart. Thank you so much. I mean, the audio. I mean, if you, I don't think the back speakers were that much, effective here. But I mean, if you watch it on a proper 5.1 or 7.1, it looks like the sound design is. I mean, Urmila has done a great job. I mean, so there are small things I can't tell you. I mean, because we couldn't shoot in certain way, he introduced those things with a sound. When she attacks that guy, he added that kabutar ka sound, pigeon sound, and that made it impactful and all that. So that's the all his contributions. So yeah, thank you so much. So since they are living in a proximity in the same district of the suburban part of the thing, they cross, their paths cross each other, and without knowing them. Also, there is a minor, butterfly effect, right? A minor thing that you do that can have a major, a tornado effect eventually. So, which we are even not aware of, So that was the idea, that a minute action of yours can cause, really grave consequences on someone else's life, and they are not even aware. But their paths crossed somewhere. So that was the idea. Thank you very much for coming here. दो चीज़ें कहना चाहता हूँ। जब तक मैं फिल्म इंडस्ट्री के साथ नहीं जुड़ा था, तब तक फिल्म देखने का नज़रिया कुछ अलग होता था, लेकिन जब फिल्म इंडस्ट्री के साथ आकर जुड़ा हूँ तो एक विजन खुला है। इतने लोगों की मेहनत है, कितनी आसानी से हम लोग कह देते हैं अच्छी नहीं मिली, है ना, रिएक्शन होता है, मज़ा नहीं आया या पैसा वसूल। मेरे हिसाब से अच्छी फिल्म वो है, देखिए हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, हर एक अपने आप में एक ब्रह्मांड है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हर एक अपने ब्रह्मांड का सूर्य है, और उसके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं वो उसके ग्रह हैं। हर आदमी की एक अपनी स्टोरी है। अच्छी स्टोरी मेरे हिसाब से, आई एडमायर कुलदीप सिर्फ इस वजह से कि आप जो कुछ भी बोले, आपके साथ देखने वाला अगर कनेक्ट हो रहा है, दैट इज द बेस्ट स्टोरी टेलिंग एवर।
अगर आप अपने आप को कनेक्ट कर रहे हो, that's it. मेरे ख्याल में इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता. Thanks for giving me chance, Kuldeep. It was nice working with you. Thank you, sir. Thank you. हाय. फिल्म 2019 के मिड में शुरू हुई थी और शूट खत्म ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर के आसपास हुआ था. फिर हम लोग अपने अपने काम में जुड़ गए, बीच बीच में अपडेट्स ले रहे थे, बट बीच में कोविड आया, फिल्म रुक गई, पोस्ट रुका, बाकी सारे काम रुक गए. बट आई रियली हैट्स ऑफ टू कुलदीप सर कि उन्होंने इतनी, क्योंकि जो बात बहुत स्ट्रांगली कहते हैं वो बहुत स्ट्रांगली कहे जाते हो आप, बट जो बात इतनी नरमी से कहनी है, इतनी सेंसिटिवली कहनी है, उसे 3-3.5 साल तक अपने साथ रखना, फाइनेंशियल प्रेशर झेलना, बाकी सारी चीजें रखना और उसको कंटिन्यू करके यहाँ तक पहुंचाना. आई रियली थैंक्स अ लॉट टू यू सर कि आपने किया. Powai has been one of the first projects when I started my career in this industry. और मुझे नहीं पता था कि मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जा रहा हूँ जो इतनी ब्रिलियंट है, क्योंकि कई बार हम बिट्स एंड पीसेस में काम करते हैं, हमें पता नहीं होता कि वो ओवरऑल प्रोजेक्ट निकल के कैसा आएगा. जिस खूबसूरती से ये तीनों कहानियां आपस में पिरोई गई हैं और जिस खूबसूरती से जो क्लाइमेक्स है, जब वो तीनों लड़कियां आगे फ्रेम में पोजीशन करती हैं, ऐसा लगता है कि ये बड़ा ऑर्गेनिक है. इट्स नॉट डिजाइंड द वे दी स्टोरीज टॉक टू ईच अदर एंड द कैरेक्टर्स. सो I think I'm blessed and I feel really privileged to be part of such a project, and I thank Kuldeep for you know trusting in me and giving me this opportunity. Thank you very much. Hello everyone. I think आपको मेरा स्मृति है और ये कैरेक्टर मैं यूपी की हूँ और मेरी लैंग्वेज बहुत ही अलग है बिहार की लैंग्वेज से. तो सबसे पहले तो मैं सर को इस चीज़ के लिए थैंक्स करूँगी कि उन्होंने मुझे बिहारी सिखा दी इस चक्कर में, जो शायद मैं कभी नहीं सीखती, क्योंकि मुझे बिहार की लैंग्वेज वैसे भी बहुत ज़्यादा अभी टच नहीं कर रही थी. लेकिन सर के साथ रहकर और रेगुलर, मतलब मैं जाती नहीं थी सर के पास, बिकॉज सर का घर पवई में है और मैं मलाड में रहती हूँ, सो बहुत दूरी बहुत ज़्यादा है. लेकिन सर का हमेशा एक वॉइस नोट आता रहता था, ये लाइन है, इसे ऐसे बोलना है, आपको ऐसे से करना है, आप रियाज कीजिए और उसे मुझे भेजिए. और मैं पूरे टाइम उसको रियाज करती और सर को वापस रिप्लाई करती. तो सर की वजह से कहीं ना कहीं बिहार की वो जो लैंग्वेज का टोन है ना, वो मैंने कोशिश की. मतलब आई थिंक, मुझे नहीं पता मैंने कितना अच्छा बोला, बट हाँ, सर की वजह से मैंने इस कोशिश को पूरा करने की कोशिश की. तो थैंक्स फॉर सर. सो वी हैड एन एडी, उनकी आंट थी, वो टीचर थी, कहीं पे प्रोफेसर थी, तो हमको वॉइस नोट्स भेजते रहते, इसको ऐसे बोलो ऐसे बोलो. सो लाइन्स में उनको भेजता रहता, व्हाट्सएप पे आती थी, मैं उनको फॉरवर्ड करता था. थैंक यू कुलदीप सर फॉर गिविंग मी दिस चांस. एंड माय नेम इज आश्रिया. मैं इनकी बेटी थी और इन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया. और मेरे आशिया की ये पहली फिल्म है और फिल्म के शूट के दौरान मैं बहुत टायर्ड हो जाती थी, तो मैं कोशिश करती थी कि सिर्फ अपनी मम्मा की कमी, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैंने बहुत अच्छा वो चीज़ की, बट मुझे ऐसा लगता है एज ए एक्टर, जब आपके साथ कोई आपका बच्चे का प्ले कर रहा है तो आप उसे उस जर्नी के दौरान उसे वो फील कराएंगे, तो वो उन चीज़ों से निकलने की कोशिश करेगी. तो जो मैंने कोशिश की, आई थिंक आशिया ऐसा मेरे मम्मी पापा कभी कभी सेट पे नहीं थे, तो मुझे बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं लगा कि मेरी मम्मी नहीं है. इन्होंने बहुत मेरी केयर की. सर ने भी मुझे बहुत संभाला और मेरे मम्मी पापा भी यहाँ पे हैं. तो थैंक यू सो मच एवरीवन. Actually, the shooting conditions were very adverse. I mean, if you are seeing the, so 2 लोग बीमार भी हो गए थे. तो but they all were very supportive, and कभी कोई facility कोई चीज़ नहीं मिली तो they were very supportive all the time, and then said okay, we'll adjust this, and that's how the all the independent films जुगाड़ होता है at the end of the day. Hi everyone, my name is Vrinda. I have played Nirali character, Atashi's friend, and it was very fun shooting this character because बहुत ही fun था वो character itself, और मुझे बहुत अच्छा लगा सर के साथ, और स्पेशली उर्मिला बिकॉज शी इज़ माई सीनियर, FT एक्टिंग सीनियर. तो मेरे लिए तो बहुत ही मतलब वो ऐसा गोल्डन चांस था टू वर्किंग विद सीनियर. सो या थैंक यू सो मच. Hi, I'm Urmila Mahanta.
मेरे लिए चैलेंज थी कि मैं बिल्कुल टैकी नहीं हूँ और इस कैरेक्टर में मैं टैकी प्ले कर रही हूँ। ऊपर से जब मुझे स्क्रिप्ट मिली थी, जो टेक्निकल टर्म्स थे, मुझे तो समझ तो छोड़ दीजिए, मुझे बोलना भी नहीं आ रहा था, लाइक यू नो हाउ टू प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली। आई डोंट नो मैंने कितना अचीव किया यहाँ पे। एंड ही हिमसेल्फ इज अ टैकी और IT बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं कुलदीप जी। तो उन्होंने मुझे लिटरली सिखाया, जितने भी हम इस स्टोरी में थे, हमारा वर्कशॉप हुआ था, कोडिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, टर्म्स एंड टेक्निकल टर्म्स एंड ऑल हमें सिखाया गया और बहुत बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ी उसको याद रखने के लिए, नो वो मेरी स्ट्रगल थी। और ऊपर से और मैं नॉर्थ ईस्ट की कहानी है तो मैं बीच बीच में सेंटिमेंटल भी हो जाती थी, क्योंकि ऐसे कुछ रिमार्क्स देते थे जो फिल्म में भी है और बाहर भी हो जाता है, मजाक मजाक में कर देते थे। तो उसमें मैं कभी कभी ना थोड़ा सा मतलब यू नो वो लग जाता था कभी कभी, लेकिन इट वाज फन शूटिंग विद एंटायर कास्ट एंड क्रू, सब सपोर्टिव थे। कुलदीप बहुत ही सपोर्टिव थे, अभी भी है। एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर ब्रिंगिंग दिस फिल्म। लाइक आज हम भी एक्चुअली दर्शक ही है, फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर वाचिंग दिस मूवी, रियली लाइक्ड इट। और हम तो बायस होंगे, हमें तो अच्छी लगेगी। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू पीपल, आप लोगों को फिल्म कैसी लगी, प्लीज हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच। तो ये जो तीनों कहानियां थी, ये तीनों कहानियां बॉम्बे किसी पार्ट में भी हो सकती थी, दे कुड हैव बीन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री आल्सो फॉर दैट मैटर। तो ये क्रिएटिव डिसीजन कैसे लिया कि चलो इसको पवई में सेट करते हैं? बिकॉज बीच में एक डायलॉग भी था कि अपनी बेटी से पूछती है कि कहाँ जाना है घूमने, मरीन ड्राइव जाना है, कहाँ जाना है? वो कहते नहीं, पवई लेक जाना है। मूवी का नाम भी आपने पवई रखा है। तुम्हारे डायरेक्टर वही रखा है। हाँ, दैट मेक्स सेंस। तो ये डिसीजन कैसे लिया कि लेट्स बेस इट इन पवई? ओके, सो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। So I was stuck in Powai with family and all that, with a tech job and everything, and I wanted to make something set in Mumbai. So I wrote a story about a couple and they're raising a child and all that, the urban landscape and all that. And I thought, okay, this may not be a full feature length film, and I need some more stories and all that. I started researching more, and since I've been living there, so I met so many people and all that already. Then I thought, okay, Powai itself is very interesting place. सब कुछ है वहाँ पे। हाई राइज बिल्डिंग्स है, स्लम्स है जो रीडेवलपमेंट हो रहा है उनका, कॉर्पोरेट कल्चर है, और सारे लाइक इट्स लाइक अ माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडिया। लाइक सारे रिलीजन के लोग भी रहते हैं, सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ वही मैं अनदेखा करके बाकी सब जगह पे ढूंढ रहा हूँ स्टोरी। इससे अच्छा है कि मैं देयर इज़ अ लेक, देयर इज़ अ हिल, ऐसी कई सारी चीज़ें आपने देखी नहीं होगी शायद पहले। तो देन आई स्टार्टेड वीविंग मोर स्टोरीज एंड देन दैट्स हाउ इट केम टू बी। That's great. Kuldeep was tense कि मतलब Saturday है, afternoon है, लोग आएंगे। Kuldeep, see the entire Mumbai has come to see your film and they have liked it as well. So great, thank you. I think we have time for one more question before we wrap. Two? Okay, we'll ask two more questions and then we'll wrap. Yes, please. Hi Kuldeep, first of all, congratulations to the entire team for executing such a good project. So I just want to ask, the movie looked very authentic. So what was the research process in writing, and how much time it took for you to write the script and be satisfied? Like, I can now move on to the next part of the production. So it is always, it always evolves. While shooting also there are changes keep happening. I can give you an example. So जो बारिश हो रही है तो each and every day for a small film is very crucial, and then that day it rained, so that we thought, okay, the shoot might get stopped and we won't be able to, the day is wasted. But then we incorporate that into the story, that okay, Mumbai mein barish hoti and all that. So I research. I've been living there for like close to 8 to 9 years. So I've been meeting people. I speak to my house help and the watchman and a lot of people. I keep talking to them. So and then I started actively doing that, and this redevelopment thing came very frequently to whenever I interacted with them.
So a lot of them are going through this process and waiting for a house and all that. So that became the first story. And second story, there was an Anganwadi where I went there and celebrated my kid's birthday and all that. And from there I thought, okay, this is a very interesting space where these kids are coming and government is trying to put up something, a helper kind of a person, not a regular teacher kind of person, but it's very interesting space, and that's the second story. And the third story, I come from a tech background. I still work as a CTO in a tech startup. So that was kind of, I knew that word, so that's how the stories came to be. And it took almost 6 to 8 months to put up everything together and write the full script. Hi, I'm Shruti. I played the character of Rubina in the movie. So for me, Powai is like a blessing, I would say, क्योंकि मैं जब मुंबई शिफ्ट हुई थी तो मेरा सबसे पहला बड़ा प्रोजेक्ट यही था, and luckily it came out so beautiful with everything, like with the team, with the crew, with the experience, with the journey, with everything. So basically I gave the audition of some side roles, but इनके ऑडिशन में क्यों दे रही थी मैं रुबीना बन के, and then casting director said, why don't you audition for Rubina? I was like, okay. Yeah, but then she's very young. I mean, she's very young and playing a role of 30 plus, in that age. So we did not. I mean, I did not even consider her. And then the casting director showed me a video, and I said, okay. And so sir said me, वजन बढ़ा सकती हो? मैंने बोला सर खाना तो शौक है. तो फिर पवई हुई और 2019 में हमने दिवाली के टाइम पे वो शूट किया और अभी तक हम इतने इम्पेशेंट हो गए, लेकिन कुलदीप सर वाज सो पेशेंट विद मूवी एंड सीरियसली थैंक यू सर. मैं कहीं भी जाती हूँ और मुझसे कोई मेरा वर्क एक्सपीरियंस पूछता है तो मैं पवई का नाम पहले लेती हूँ, बिकॉज इट्स दी सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा किसी फिल्म सेट का रहा है तो वो पवई का रहा है, जहाँ पे हमको कोई वैनिटी नहीं मिली थी बट हमें रिलेशंस मिले, कंफर्ट मिला, लव मिला एंड बहुत कुछ सीखने को मिला. तो पवई इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ टाइम की सबसे अमेजिंग मूवी पवई रहेगी. सो थैंक यू सो मच. Okay, last question. Yes, sir. Please ask your question. Is there a mic? Mr. Patel, are you related to Vallabhbhai Patel? Is that a... I don't think that was a question. He was just joking. Well, yes, you have a question related to the film. Please ask. हेलो एवरीवन, मैं आकाश हूँ नवभारत न्यूज़पेपर से. सबसे पहले तो फिल्म की टीम को ढेर सारी बधाई. एक फिल्म के अंदर 3 बेहतरीन कहानियाँ आपने पेश की है. मेरा सवाल कुलदीप जी आपसे है कि तीनों कहानियों को एक साथ लेकर पेश करना कितना मुश्किल था आपके लिए, क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के नाते हमारे पास उतनी बैकिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कमर्शियल फिल्मों की तरह, तो कितना मुश्किल था आपके कहते हैं कॉस्ट को, ओवरऑल कहानी को मेंटेन करना, साथ ही साथ इस फिल्म को आप आगे चल करके किन फिल्म फेस्टिवल में पेश करने वाले हैं? So it was very difficult because तीनों अलग अलग पूरी अलग कहानियाँ हैं, तो हमने बहुत ही अलग अलग जगहों पे शूट किया और परमिशंस नहीं मिलती मुंबई में. सबसे बड़ी चैलेंज वो है. तो हमने ये किया था कि सबको यही बोलते थे कि हम एक NGO का डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं तो कुछ नहीं है. तो एक हाथ से मैं यहाँ पे लोगों को रोकता था कि यार मत जाओ यहाँ पे आई एम कॉलिंग द शॉट्स तो सारे मतलब एवरीवन वोर मल्टीपल हैट्स सब EDs ने बहुत मतलब एक ED 3 डिपार्टमेंट का काम कर रहा है. सो दैट्स हाउ वी इवेंचुअली मेड दिस फिल्म. And then it opened at in terms of festivals, it premiered at Moscow. Then it went to New York Indian Film Festival where it won Best Screenplay. Some more festivals in the US. And then there is a film festival in Yalta. Over there it also played. And then we are still looking forward to the journey of the film. Hats off to Kuldeep sir कि उन्होंने इतनी क्योंकि जो बात बहुत स्ट्रांगली कहते हैं वो बहुत स्ट्रांगली कहे जाते हो आप. Can we hear once again a huge round of applause for the entire team of Powai. Thank you so much everyone and all the very best. I hope the film
gets much more audience after this, gets to travel to many more festivals, and hopefully will find a release very soon. So let's all pray for that. So Obro is one of the best curators. He was part of the work in progress lab where our film was selected, where we sit down for a week, and then the mentors will give all the inputs and we re-edit the film and all that. So he was part of that team, and he is doing amazing job for this festival also. And yeah, he was there part of the Dharamshala International Film Festival also. So thank you so much, Obro, for Thank you for listening to all that the mentors have said about the film. I'm sure it has helped, and it has now become even better. That we always knew the film was strong, but now it has become even more polished, and all the very best to the entire team. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you.